what in our class I will read. No, no, no. We stopped there. We stopped at the place where now we need to discuss right now. So we are here right now. So like we have discussed now today we have to discuss about this thing. Distributed ledger technology. Okay. So ये distributed ledger technology है क्या? What is this? Let us now understand about this. And here there are three things. This distributed ledger technology is again used in the blockchain, and blockchain is a kind of a distributed ledger. Okay, so we will see that in the next session. First let us see about distributed ledger. Let's go ahead. So now let's see here distributed ledger technology. So let's go to some 1960s. Okay, let's go back to 1960s. So what used to happen in 1960s? So when you go back to 1960s, if you want to do any transaction, that means if you want to buy something, say if you have a shop, okay. So 1960s में जाके देखते हैं, and if you want to buy something, कोई आपको कुछ खरीदना है, okay. Suppose you want to do any transaction, and transaction is nothing but you need to buy something, okay. Say if you have a shop, let us say you have a shop, and then to do some transaction you buy products from the dealer and then you sell it to the customer, correct? तो क्या होता है, आपका एक शॉप है and you are doing a transaction. Transaction is nothing but transaction. If I have to say definition of transaction, certain activities which can bring certain changes to your business, okay. So when do you do a transaction, that means if you buy goods, you buy goods or you purchase goods, goods come into your business, that means your inventory increases, and what happens, your cash decreases. So the changes are going on in your business, am I right? Yes. So you have a shop, so you bought goods from a dealer and you sold it to customer. So now you maintain every day this transaction details in a book. That book is called what? Ledger. So Okay. whatever transactions are happening in your shop on daily basis, you are maintaining a record of all this in a book called ledger, correct? Yeah. सही है sir? Now, Yes. Yes. next point. So this is not only the case with a shopkeeper, every office, small office or big office, and they used to maintain everything in a book called ledger. Whether I speak about a small business, in 1960s it was the case, a big business. So everyone used to maintain the transaction, daily transaction details in the books called ledger. So they used to call it as a ledger. Now let's move forward to this. एक छोटा concept समझ में आने के बाद. So what was the problem with this, and why this distributed ledger technology came into picture? So now the problem is, every time you have a transaction, let's say if you withdraw money or deposit money, okay, in a bank, the transactions are recorded in a book. So they have a central book, and that's why it was recommended that everyone have to stick to the home branch. Suppose अभी क्या होता था सर पहले, suppose if I take a banking concern, अब ये बैंक है, ठीक है, एंड ये बैंक का लेडजर है. इफ यू विड्रॉ मनी, मतलब बैंक का लेडजर नहीं, मतलब आपका भी लेडजर है, बैंक पे ऐसा एक लेडजर मेंटेन करता.
if you withdraw money or you invest or deposit money, all the details you have to maintain where, or transactions in a book called ledger. Am I right? Yeah. एंड दैट सपोज अभी बैंक के पास है वो लेडजर, सपोज ये बैंक है और ये आप कस्टमर है, ये कस्टमर है, कस्टमर विड्रॉ करे या कस्टमर डिपॉजिट करे बैंक में, बैंक एक लेडजर मेंटेन करता, करेक्ट और नॉट? Yes. और आप भी लेडजर मेंटेन करते। आपका आपका बिजनेस छोड़ दो, अपन बैंकिंग कंसर्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बैंक एक लेडजर मेंटेन करता और वो लेडजर बैंक के उसी ब्रांच में रहता, द सेम ब्रांच इन विच यू हैव एन अकाउंट, करेक्ट और रॉन्ग? Yes. Yes. So now the problem is every time you have a transaction, let's say if you withdraw money or you deposit money, the transactions are recorded in a book. So वो बुक को क्या बोलेंगे? Ledger. सेंट्रल लेडजर यानी सेंट्रल बुक बोलिए। Mm-hmm. Okay, and then what is that? Being a customer of the bank, you have to always stick to the home branch. And you cannot just go to another bank and draw money. So here what is happening? You can only go to this bank and withdraw your money, correct? Yeah. Because all the records are in this bank and these records are not shared with anyone. It is centralized. What am I saying here? Centralized. Central book or it is a center, it is record. This record is kept with this bank itself and they are not sharing it with anyone. You cannot go to another bank and draw money, because that branch will not have your data. That was the issue. That means if you suppose happen to go to Delhi and you there also you have a ICICI bank ka branch, but that branch you cannot withdraw your money because that branch will not have your data, correct? Your data is only Yeah. with the Hyderabad branch. Am I right? Yes. So that because that bank will not have the data. So that was the issue. And they used to have central copy in one branch. So the central copy or central ledger is with one bank, one branch. Okay. But if you want to have access to multiple branch, there are multiple there are multiple use case. That means you have lot of users, you go to places and you have requirement. Okay, and there also you require money at sometimes to withdraw. But what is happening? So since you have multiple users at different places, you are going to Delhi, Mumbai, and you want to make payments, you don't want to carry that much of cash. Am I right? That is not safe. So you can Yeah. abhi ATMs bhi nahi hai. We are speaking about 1960s. You don't have ATMs and all. So you have to go to bank, give them the check and withdraw money. But the other bank branches cannot give you. Why? Because your data is not with them. Your data is only with one branch or one bank branch in which you have the account. That is only one branch, correct? Yes. But you want your data everywhere. Okay, Mm-hmm. but your data is with here with this bank. That is, it is just centrally maintained by this bank. So I'll write some points. So your central copy is with this one bank. Okay, but you want but if you want to have access to multiple branch, there are multiple use case. That means you have multiple users, it seems. Let's say whereby you want your data everywhere.
तो बोलने का मतलब ये है सर कि आपको आपका आपका अकाउंट है काचीगुड़ा ब्रांच में, आपको जो कुछ भी ट्रांजैक्शन हो रहा वो काचीगुड़ा ब्रांच में मेंटेन हो रहा, वो ब्रांच ही मेंटेन कर रहा आपका रिकॉर्ड्स उसका लेडजर में. एंड Okay. if you want, if you go somewhere else and if you want to withdraw money with another bank which is also ICICI bank's branch, there you cannot withdraw. Why? Because your data is not with them, your account is not with them, correct? Your account is with this bank and the transactions and everything, all the details are maintained with this bank. Okay, but what is the requirement here? You want your data everywhere. Why? Because wherever you go, you want easily, you want that you want to withdraw money easily from every branch. Wherever you want, you can withdraw, and that facility is what you require. Okay, Yeah. so whereby you want your data everywhere, so that's one thing. If you have your data at central point, so basically what is happening, you have, so you are having your data at central point. So I'll tell you what is happening here. Everywhere, let's put a full stop to this. Okay, so if you have your data at central point, just one point, that is like this branch we discussed. So basically what are you having? Basically you have multiple nodes. Okay, so here with multiple nodes I mean to say multiple computers. Okay, or multiple branches, कुछ भी समझ लो सर. Okay. So multiple nodes को मैं क्या बोलूंगा, multiple computers. Okay, और multiple people समझ के रखो. So if they want to share data, they used to make central repository or a central server basically, and they used to access data from this server. तो अगर आपका एक centralized रहेगा ना सर, अगर आपका डेटा मल्टीपल जगह पे भी रहना चाहिए ना. हेलो. Hmm. Yeah, yeah, Jen. See, previously your data was only with one branch. Now Hmm. what is happening, as the banking sector expanded, for example, and more branches were created, still those branches have to be linked to the head branch where you have your account. Am I right? Yeah. And they have to be connected to this central server only. So that's a single point, single server. Okay, where everyone is connected. So let's see. Node 1, computer number 1, node 2, computer number 2, node 3, computer number 3. They are all connected to a central repository or central branch समझ लो sir, central server समझ लो. Hmm. I think you are familiar with this word called repository. In the clearing process I have used this word. Clearing and settlement process बताया था ना sir. Yes, yes. हाँ. So what is happening? So there are multiple nodes here, and if these computer number 1, computer number 2, computer number 3 want to share data, they cannot share among themselves. Okay, they used to make central repository here, and that means the central server, basically they used to access data from this server. That means this computer, this computer and this computer have to get the data from the central server. Correct or wrong? Yes, yes. So now it's a single point. Am I right? This is a single point. Correct or wrong? Yeah, yeah. So now what happens if there is a, if the server is down? Yeah, everything will go right. And or else what happens if there is a virus attack? You will Yeah, yeah. lose all Uh, your data. Correct or wrong? yes, yes, everything will be gone. That's the reason why अगर एक central, एक ही बैंक के पास सब कुछ रहेगा and every branch is dependent on that bank and they will not share the data. Okay, always जब requirement रहेगा तभी share करेंगे, या जब
लाइक जब जरूरत होगा तभी वो डेटा पूछेंगे या परमिशन से ही वो डेटा ग्रांट करेंगे. तो सपोज इफ दिस सर्वर इज डाउन, ओके, so if you want to deposit, if you want to withdraw your money in Mumbai and you went there, you approach them, these guys have to approach this central repository or the branch where you have your main account or main branch, am I right? And all the data is with this bank, but server down है तो क्या करते सर आप? या अगर इसको वायरस अटैक हो गया तो क्या करते हैं? Everything will be That lost. means you will lose your data, am I right? Yeah. So what happens if the server is down? Okay, or there is a virus attack. So there you will lose your data. And now there can be some issues even. So you will learn tomorrow in the blockchain technology concept, which is used in the Bitcoin, and why this Bitcoin is a rage, and why the Bitcoin is having so much of importance. एक छोटा सा डेटा बताता हूँ Bitcoin का. You will even understand what this Bitcoin is doing actually. So यहाँ पर देखो, on May 22, Laszlo Hannex pays 10,000 bitcoins for 2 pizzas delivered to his house, and the value was $25, correct? Okay. In April 1st, 2017, a bitcoin was worth this much dollars. Oh my God. पहले आपका 10,000 बिटकॉइन दिए तो $25 का वैल्यू का पिज्जा आता था. अब 2017 में एक बिटकॉइन इतना डॉलर्स हुआ, एंड 3 मंथ्स के अंदर में बिटकॉइन इज दिस मच. See how it jumped, and why this jumped? This is because of the beauty or the invention called the blockchain technology. मैं कल पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको. Okay. This is the price of one bitcoin in India. Oh my God. This much. 43,17,364, and whoever made this, whoever bought this has made fortunes. Oh my God. I mean, you mean to say when these Yes, that's when what sir. this हम लोग when खाली sleeping mode में है. People have made money. नहीं कब इन्वेस्ट किए, कब लिए थे ये लोग? हाँ सर ये 2008 से आ गया ना. साताक ये आपका नाकामोटो, साताकामी नाकामोटो कोई है. अभी वो कोई भी नहीं मालूम है कौन बनाया ये. वो अंडरग्राउंड है. इट्स अ सूडो नेम. दैट मीन्स वो एक नेम है बस. एक ऐसा ये बनाया बोल के ऐसा बाहर आया बस. इट इज वन बिटकॉइन इज 59,024.70 US dollars, sir. Oh my God. That is what सतोशी नाकामोटो ये बंदा है बोल के बोल रहे, लेकिन क्या है बोले तो मिस्ट्री है अभी भी. नहीं what exactly this will do with bitcoins? सर बिटकॉइंस क्या रहता बोले तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रहता सर. एक काम करेंगे, आज आप डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर पढ़ो, कल मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ बिटकॉइन क्या है, कैसे फंक्शन करता, क्या रहता, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी ऑन व्हाट इट वर्क्स. बिटकॉइन का सबसे बड़ा क्या है ना सर, बिटकॉइन एक्चुअली क्या है, इट वर्क्स ऑन दिस टेक्नोलॉजी ओनली, दिस डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर. ओके, जैसे आपके पास आप भी एक बिटकॉइन है, मेरे पास बिटकॉइन है, हम लोग चारों लोग एक 8-10 लोगों को अगर मेरे को आपको पेमेंट करने का है, सो इट इज अ ओपन सर्वर, ओपन लेडजर समझ लो आप. ओके, आपके जैसा मेरे जैसा पूरे वर्ल्ड में 1,000 लोग के पास बिटकॉइन है. इट्स अ डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी. दैट मीन्स इट इज नॉट अ फिजिकल करेंसी. Everything whatever you want to make, you have to make the payment through online. It's a currency come payment also. Hello. Yeah currency come It's payment. a currency come payment. So आप जिसको भी पेमेंट कर रहे हैं, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, किसके अकाउंट में कितना पैसा है, किसी भी वर्ल्ड में आपके फ्रेंड के अकाउंट में कितना पैसा है बिटकॉइन में, हम सबको एक ही बार में मालूम होता है इंफॉर्मेशन. दैट इज व्हाट इट इज डिसेंट्रलाइज्ड.
मतलब एक ही बंदे के पास कॉपी नहीं है, सबके पास कॉपी है. So what happens with this is, what happens with this, हम सब लोग कनेक्टेड है, am I right? Yeah. अब उसमें क्या होता, ये ब्लॉकचेन, ये पूरा जो भी प्रोसेस चलता बिटकॉइन का, ये पूरा एक ब्लॉकचेन के हिसाब से, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलता. एवरी ब्लॉक इज कनेक्टेड टू ईच अनदर ब्लॉक. मोर मेंबर्स ज्वाइन इन इट, मोर मेंबर्स ब्लॉक्स क्रिएटेड. करेक्ट. सो वो प्रीवियस मेंबर क्या है, हमारे से कनेक्टेड रहता, हमारा क्या है और एक मेंबर से कनेक्टेड रहता, और वो जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ता वैसे वैसे एक कोड मिलता उसके साथ. कोड, व्हाट इज दैट? Code. वो Mm-hmm. कोड को कोई भी चेंज नहीं कर सकते. वो चेंज करा बोले तो पूरा सिस्टम को मालूम हो जाता कि देयर इज सम प्रॉब्लम हैपनिंग. Okay. सो दैट इज व्हाट, उसको हैक करना मुश्किल है. कोई भी हैक किया बोले तो इमीडिएटली मालूम हो जाता. उसका कोई भी काउंटरफिट नहीं कर सकता करेंसी को. दैट इज द रीजन व्हाई मेनी गवर्नमेंट्स आर नॉट ब्रिंगिंग इट. करप्शन खत्म हो जाता बिकॉज एवरीथिंग विल बी डिजिटल, everything will be connected, everyone will know the information, no one is hiding the information. गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है बता रहा क्या सर? Hmm. बता रहा क्या? नहीं. अभी अगर बिटकॉइन इंडिया में लेके आया तो गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है आपको मेरे को दोनों को मालूम हो जाता. किस Yeah. पॉलिटिशियन के पास कितना पैसा है आपको मेरे को दोनों को मालूम हो जाता. उसको Mm. उसको हमारे पास कितना पैसा है वो मालूम हो जाता. सो दे कांट प्ले फूल. करेक्ट. Yeah, yeah. सो उसमें क्या होता, लेकिन अभी उसका भी एक आ गया, क्वांटम कंप्यूटर्स आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू हैक इट. क्योंकि देर आर पूरे वर्ल्ड में जितने भी एक 10 लाख लोग हैं तो 10 लाख लोग के सर्वर में सबके पास इंफॉर्मेशन है किसके पास कितना पैसा है. इट्स वेरी टफ टू हैक बिकॉज एवरी मेंबर ज्वाइनिंग अ ब्लॉक इज क्रिएटेड. करेक्ट. एंड द ब्लॉक इज कनेक्टेड. सो ब्लॉक इज कनेक्टेड, दैट इज ब्लॉक चेन. एम आई राइट? Yeah. तो एक बार आप एक आइडिया ले लो. टुमारो आई विल एक्सप्लेन यू विद डिटेल्ड लाइक एक्सप्लेनेशन. पूरा डायग्राम बना के सब करके पूरा समझाता हूं. और ये ब्लॉकचेन में क्या क्या कंटेंट रहता है वो भी बताता हूं मैं. ठीक बट है. बिफोर दैट यू शुड लर्न दिस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी फर्स्ट. दिस इज व्हाट Okay. is completely applicable in the blockchain technology. Okay. So if the server is down, virus attack, or you lose your data, what happens? And anyone can change the data from central server. That was the issue. Correct or wrong? Yeah. In this Bitcoin, they can't do that. If anyone does that, ना immediately आपको बजर जैसा ट्रिगर जैसा आ जाएगा कि ये ऐसा ऐसा हुआ बोल के. बिकॉज अभी सपोज मैं ब्लॉक में फर्स्ट हूँ. ओके. मेरा डेटा है, मेरे को एक कोड दिया 567. ये 567 क्या है बोले तो ये मैं, दिस इज द प्रीवियस पर्सन कोड. करेक्ट. Yeah. हेलो. Yes, yes. अब कैसा रहता सर, अब ये ब्लॉक है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4. अभी आप डोंट गो इनटू द मैकेनिक्स, ये ब्लॉक क्या है, कहीं को आ रहा, क्यों आ रहा, ये सब में मत जाओ सर. मैं कल बताता हूं आपको ये ब्लॉकचेन क्या है पूरा. नीड नॉट वरी अबाउट दिस. मैं आपको ये बता रहा हूं कि दिस इज द फर्स्ट पर्सन जिसका जो ब्लॉक, इसको जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं. ये फर्स्ट पर्सन, इसका ब्लॉक 000 कोड है. ओके. फर्स्ट से अब इसको 001 मिला. अब ये 001 मेरे यहां पर दिखता आपको. आई एम Mm-hmm. कनेक्टेड ना टू दिस गाय, दिस सर्वर. हेलो. Mm-hmm. Yeah, yeah. I am connected and again I get a new block, new code 002. Again ये 002 यहाँ रहता. अगेन इसको एक नया कोड मिलता, ये प्रीवियस वाले के साथ कनेक्टेड है, ये नया कोड 003. ठीक है. अगेन दिस विल बी सीन हियर, अगेन ही विल गेट ए न्यू कोड. तो ये क्या हो रहा, ये पूरे के पूरे जो भी ब्लॉक्स है वो हम लोग चेन, एक चेन के हिसाब से कनेक्टेड है. नाउ if anyone tries to hack, for example, anyone tries to change the information in this, so this is Okay. connected to whom? Like previous thing. Everyone. अगर इधर पर कोई हैक करा बोलता वो इंफॉर्मेशन इसको मिल जाता. करेक्ट. Mm. सर इसका जो Yeah, yeah. कोड है 002, वो कोड यहाँ पर भी है ना. Yes, yes. अगर कोई इसको हैक करा बोले तो ये इंफॉर्मेशन इसको Previous भी मिलता. person. करेक्ट और रॉन्ग? Yeah, yeah. सो इमीडिएटली डिटेक्ट हो जाता. ऐसा कम से कम जितने भी लोग हैं ऐसा पूरों को मालूम हो जाता. Yeah.
So no one can do any kind of hacking and all. But क्वांटम कंप्यूटर्स आ गया. क्वांटम कंप्यूटर्स मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी सर्वर है, जिनके पास भी इंफॉर्मेशन है, सबको वन टाइम अटैक करके खत्म करेंगे बोल के है. सर टेक्नोलॉजी आ गया बोले तो उसका वो भी आ जाता, कैसा किल करना है. Okay. There is someone working for positivity and someone equally working for negativity. But it is not that easy to kill it. They're trying अभी वो थियरी चल रहा. बट स्टिल बिटकॉइन तो इट्स वेरी टफ. मतलब कोई उसको कुछ भी नहीं कर सकते. नाउ सो यू लूज योर डेटा एंड एनी वन चेंजेस योर डेटा. मतलब अभी सेंट्रल बैंक में अगर कोई कुछ डेटा चेंज कर दिया बोले तो व्हाट यू कैन डू. Yeah. वी विल नॉट नो. करेक्ट. ओनली दे दोस पीपल विल नो. So that's why these banks, that's why the need was created to go for a distributed ledger. Because central ledger में पूरा data एक ही जगह पे रहे तो anything happens, we lose our data. So that's the reason why a need was created to come out with distributed ledger concept. Correct or wrong? Yeah. Yes. Now, so why this distributed ledger system? Distributed ledger system इसीलिए क्योंकि everyone will have their own copy. Okay, so that everyone will have their own copy. मतलब आपका जो ब्रांच में अकाउंट आप ओपन करें ना, वही अकाउंट का इमीडिएट डिटेल्स पूरे बैंक ब्रांचेस को चले जाता. करेक्ट और रॉन्ग? Yeah. ऐसा जाने से क्या होगा? Whenever you want, you can go to some other branch and withdraw your money because they have your information. Correct? They are not relying on, or they are not dependent on the central block Central or the system. central server, Yeah. central party. पूरा ट्रांसपेरेंट है, नथिंग टू बी हिडन. Yeah. So let's say there are 4 nodes in the network. We'll draw a diagram and check it. So suppose 4 branches समझ के चलो सर बैंक का. ओके ये आपका डेटा है, मतलब आपका लेडजर. सबके पास एक एक कॉपी है. करेक्ट और रॉन्ग? Yes. Everyone is having the record here. Correct or wrong? Yes. Yes. Bank. All are interconnected. Okay. So these are the things. So suppose let's say you have 4 nodes or 4 computers, 4 branches समझ के चलो. Okay. ये पूरा का they are connected with some network. ये पूरे के पूरे are, these are all connected. Okay. So suppose 4 bank branches ले लेंगे. Easy to understand. So what is happening here? There are 4 bank branches and the 4 branches for a particular bank. Suppose ICICI bank का 4 branches है sir. Correct? Yeah. So every bank or every branch will have all the record of all the customers of all the branches. So whatever the record the Himayatnagar branch had, okay, the same record will be with the Kachiguda branch, with the Gachibowli branch, with the like Secunderabad branch, with the Panjagutta branch. सबके पास
जितने भी कस्टमर है सबका इंफॉर्मेशन इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी. Correct? Yeah. So the advantage is what? If I invest my money in, let's say, one branch, maybe after 3 to 4 days, if I go to a second bank branch, they will have my data. Correct or wrong? Yeah, of course. So they are sharing the data. Correct? Because मेरा data सारे banks के पास है. Yeah. So they are continuously sharing data. Maybe every day at the end of the day, maybe for example, they are sharing data with each other. So that what is distributed ledger means, same thing done in internet and with the help of technology. So we call it as distributed ledger technology. So what is happening, sir? The data is distributed amongst all of them. It is not kept with the central server. The data is shared with all the branches. This branch has the data of this branch, all the data. This Kachigoda branch data, whatever Kachigoda branch has the data, the same data is with the Gachibowli branch. Whatever data this bank has, it is with the same. So whenever you want, you can go to another bank and withdraw your money. Correct? Because they have your data. They are not dependent on the central server or something. They need not ask data from another server. Correct? Yes, They yes. need not wait for it because the data is shared with all of them. Either at the end of the day, either tomorrow, but data सबके पास रहेगा. Correct or wrong? Hmm. Hello? Yes, yes, Jayant. So that is what is distributed ledger concept. But what is happening? You are using technology for this. ये पूरा का पूरा you are doing with computers, with internet. Yeah. So here the technology is getting added up. Yeah. This is the marriage of the old ledger concept, whatever the ledger was used, and the technology. मतलब पहले एक ही बैंक के पास पूरा का पूरा डेटा होता था. अब वो डेटा ये बैंक अपने ही पास नहीं रखे, फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फॉर टू गिव मोर गुड फैसिलिटीज, और कस्टमर को एवरीवेयर द सेम काइंड ऑफ फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल बोल के, दिस बैंक इज शेयरिंग द डेटा विथ ऑल इट्स ब्रांचेस ऑल्सो. This is called distributed ledger. अब वो distributed ledger you are doing with the help of technology these days. So it has become a distributed ledger technology. Okay. Yes, yes, So yes. now if the data is shared with all the nodes have the copy, their own copy. Okay. So we call it as distributed ledger technology. And see, ये कई बार क्या होता है सर, विद परमिशन भी होता है, विदाउट परमिशन भी होता है. करेक्ट? Hmm. सी एट टाइम्स वो क्या होगा कि लाइक ये बैंक उनको परमिशन ग्रांट करेगा तभी डेटा शेयर होगा. एट टाइम्स परमिशन ग्रांट करने का जरूरत नहीं है. एवरीवेयर द डेटा कैन बी शेयर. Okay. गॉट इट? एंड Yeah. विद दिस लास्ट पॉइंट. सो ये क्या हो रहा सर, अभी ये बाहुबली का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, सेकेंड पार्ट बाकी है. सो ब्लॉकचेन is a type of distributed ledger technology. So tomorrow we will check what is blockchain technology. That's why I am saying part 1 khatam, part 2 we'll see tomorrow. So आपको क्या समझ में है सर ब्लॉकचेन ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर के बारे में? ये शेयर्ड के नेटवर्क जैसा शेयर होती है, लाइक एवरी इंफॉर्मेशन विच आर पहले ट्रांजैक्शन विच क्या आर था बोले डूइंग, तो एक ही इट्स सेंट्रल सर्वर था, सिस्टम. वो एक ही ब्रांच था, सारा डिटेल्स उसके पास ही रहता था. ओके. एंड ये जितने भी ब्रांचेस है उनको अगर डेटा चाहिए तो दे यूज टू आस्क दिस ब्रांच. अगर ये ब्रांच में अगर वायरस अटैक हो जाए, सेंट्रल सर्वर अगर पूरा खराब हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सो इनको डेटा नहीं मिलेगा एंड द कस्टमर हैज टू सफर. करेक्ट और रॉन्ग? या. इसको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर टेक्नोलॉजी हैज कम इनटू पिक्चर, एज पर विच it is the data is not with only one bank. The data is shared amongst all the branches and every branch will have the data of all the customers of all the branches. काचीगुड़ा ब्रांच के पास ये ब्रांच का सब ब्रांच का डेटा रहेगा. करेक्ट? सो अगर कोई बंदा काचीगुड़ा ब्रांच में आके अगर विड्रॉ करना है तो कुछ भी नहीं है, वो यहाँ पर आके वो चेक दिए तो उसको पैसे मिल जाते. क्यों?
क्योंकि इसके जो कंप्यूटर या सर्वर है इसका, ये कस्टमर का वहां पर डिटेल वहां पर रहता। करेक्ट और रॉन्ग सर? Yeah, exactly. सर ये तो जनरल बैंकिंग का टर्म है ना। अभी मेरे को हिमायत नगर में हूँ, मेरे को हिमायत नगर में पैसा विड्रॉ करना है या मेरे को पैसा चाहिए, तो मैं वहां जाके हिमायत नगर के ब्रांच में अगर बोलूं, मेरे चेक दूं, तो मेरे को वो मना नहीं करेगा ना, बोलेगा यस यू कैन टेक द मनी, विड्रॉ द मनी फ्रॉम एनी ब्रांच भाई। वो सिस्टम वो Hmm. क्या करेगा, मेरा फोन नंबर लेगा। सर आपका फोन नंबर बोलो। फोन नंबर बोले तो फोन नंबर को क्या करेगा, उसमें टाइप करते हैं मेरा पूरा डेटा उसके पास आ जाएगा, इमीडिएटली चेक लेगा, मेरे को पैसे दे देगा। करेक्ट? Yes. क्योंकि मेरा अकाउंट में कितना पैसा है उसके ब्रांच में, उसके सर्वर में रिफ्लेक्ट करेगा। Yeah. बट प्रीवियसली इफ आई गो टू 1960s एंड ऑल, जब हमारे फादर एक ही ब्रांच में अकाउंट रखते थे, उसके पास जाते थे, दूसरे ब्रांच को गए तो हमारे पास नहीं है इंफॉर्मेशन बोलता था। करेक्ट और रॉन्ग? Hmm. हेलो? Yes, exactly. अगर मेरे फादर दिल्ली को गए तो दिल्ली वाला बोलता हमको क्या मालूम साहब, बिकॉज दोस डेज एवरीथिंग वर डन मैनुअली ना। एवरी Yeah, एवरी एवरीथिंग वाज इन बुक्स। बुक्स में मेंटेन करे तो हाउ कैन दे शेयर द डेटा? can't be shared. Yes. वो क्या है, एक महीने दो महीने के, तो वो डेटा शेयर करने का जरूरत भी नहीं था पहले, बिकॉज एवरीथिंग वॉज नॉट दैट डेवलप्ड। तो फादर का जो ब्रांच में पैसा है वो ब्रांच से विड्रॉ करके लाना, चेक दे के, एटीएम भी नहीं था, वो पैसे लेके फिर जाना गांव को। करेक्ट? Hmm. पहले हमारे फादर के जब छोटे थे तब क्या था सर, एटीएम भी नहीं था, और ब्रांच को गए तो वहाँ विड्रॉ भी नहीं कर सकते थे। जो ब्रांच में अकाउंट है वही ब्रांच के पास पूरा इंफॉर्मेशन रहता था, वही हमारे को इंफॉर्मेशन देखता था, मैनुअली देख के हमारे को पैसा दे देता था। अभी हाँ. तो वैसा नहीं है ना, अब तो एनईएफटी इनईएफटी कुछ भी हो रहा है, अब तो आपको पैसा कैसा चाहिए वैसा ले सकते हैं आप। अभी क्या है, ऑल बैंक्स विल हैव द डेटा, ऑल बैंक्स, ऑल सर्वर्स विल हैव द डेटा of all the customers of all the banks, like ICICI का पूरे branches का मैं बता दिया। and since everyone is sharing the data, and the data is not with only one branch, it is distributed amongst all the branches, this is called distributed ledger technology। okay Yeah. sir? Okay. Yeah. so Where ये is this अगर रीडिंग मारे तो cryptocurrency नया। used? ये क्या सर? cryptocurrency किस पे यूज होगा? सर कल बताता हूँ आपको, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया तो टुमारो वी विल डू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आई विल यूज द क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का एग्जांपल। ओके? ठीक है. Okay. ओके सर। अभी आप कभी भी नहीं भूलना सर, ये जो भी अपना ये कॉन्सेप्ट है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, बहुत एक्चुअली में क्या है, ये टेक्निकली देखे तो आप पूरा गूगल में सर्च मारो नहीं समझ में आता, बट ये एग्जाम्पल से ये क्लियर होता पूरा। Hmm. समझ में आया सर आपको ये? Yeah, I got it. It's clear. सो या सो डीलर टुमारो हो व्हाट वी कैसे कैन, करते? दीज आर ऑल टेक्निकल टर्म्स सर, टेक्निकल है, इसमें बहुत कुछ टेक्निकल है। उसको इजी बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स डालना पड़ता है। अब कल ब्लॉकचेन आपको इजीली समझा देता हूँ मैं आपको एक बार में। इफ यू नो दिस डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी ना, नाउ यू गॉट द 90-80% ऑफ द कॉन्सेप्ट, जस्ट एप्लीकेशन पार्ट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दैट्स इट। ठीक है. Okay. ओके सर, विल फिनिश दिस अप टुमारो। So tomorrow two classes, right? At 1:30 and 4:30. हाँ सर, 4 o'clock. पहले क्लास में तो ये वाइंड अप कर देंगे, एंड वी विल आल्सो ट्राई टू फिनिश टेक्निकल एनालिसिस लास्ट पार्ट। वो दोनों तो ये और वो तो कर देंगे कल। फिर Okay. इवनिंग को आई एम प्लानिंग टू टेक दैट क्लास मार्केट एफिशिएंसी, so that Market I'll wind efficient. up tomorrow, not derivatives, I will take it last because वो बहुत अच्छे से करना है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। Mhm. तो we will do market hypothesis tomorrow, and then if I find some time I'll try to take that some part of another chapter। okay sir? हमारा ये hedging क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी लास्ट पार्ट है. क्या सर? अल्टरनेटिव हाँ अल्टरनेटिव वही 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 इन्वेस्टमेंट्स मैं है. वही बोल रहा हूँ, वो करने के लिए मेरे कल पहले एक एक करके क्लियर करते हैं सर। ओके? और मार्केट एफिशिएंसी सडनली, हेलो? ये मार्केट एफिशिएंसी सडनली क्यों आया 145? इज इट डिफरेंट है कॉन्सेप्ट? सर, चैप्टर है मार्केट एफिशिएंसी। आई मीन इज नॉट इंडिया रिलेटेड क्या? No, that's different sir, that's different। ओके फाइन, इफ इट इज ओके फाइन. Fintech is not at all related to anywhere in finance. This is technology, but you're using technology for your to make things easier. That's it. हाँ, yeah, I'm just telling this is different, like different subject, right? बोल के market efficiency. No. Sir, it's like it's about the stock market only. It's about like when you get the information, how people take the advantage of insider information and all. Tomorrow we'll discuss that. ठीक है, टाइमिंग्स. Sir, message करता हूँ, okay? ठीक है. Okay, sir. Good night. Bye bye.